Guys, now today we will start with the new topic, that is the compound interest. In the previous chapter what we have studied, that is about the simple interest. Simple interest was the formula for the simple interest, principal into rate into time divided by 100. मीन्स उसमें क्या होता है कि ईयरली ही इंटरेस्ट लगता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। सपोज करिए आपके पास जो है 1000 रुपीज़ आपने लिया, 1000 रुपीज़ पर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल है, उस पर 5 ईयर्स के लिए लेते हैं, रेट 2% है। सो हमारे पास कितना आता है, 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आता है। क्या आता है, 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आता है। मीन्स टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, व्हाट वी हैव टू पे 1100 कितना हो गया, 1100। मीन्स आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में 100 रुपीज़ ओनली इंटरेस्ट आया, और अगर हमें पे करना पड़ा तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 1100। बट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास 100 आ गया सपोज कीजिए, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 1100 हो गया। तो नेक्स्ट के लिए वो 1000 पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अब आपके लिए इंटरेस्ट के लिए अमाउंट कितना हो गया, 1100। जो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट लगना है वो 1000 ना हो करके 1100, फिर 1100 पे नेक्स्ट ईयर के लिए लगना है, उसका कुछ इंटरेस्ट आएगा, फिर वो टोटल लग करके कितना हो जाना है, वो आपका ऐसे होता रहेगा, और दैट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, that is the A minus P. A means total amount minus principal amount. Now the formula for the amount is equal to principal into 1 plus R by 100 power time. Yes, this is for yearly. इसमें हमारे पास क्या होता है, अमाउंट हम निकालते हैं ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। जब भी आपको जो है ईयरली होता है, डायरेक्टली जो भी वैल्यू गिवन है, पर एनम दिया है तो आपने रेट को पर एनम लिखना है, टाइम ईयरली दिया है, ईयर्स में गिवन है तो आपको ईयर्स में ही करना है। बट हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम आपको ईयरली दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेट आपको पर एनम गिवन है तो उसको क्वार्टरली हाफ ईयरली बनाने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्वार्टरली में क्या होता है, इन द पार्ट ऑफ द क्वार्टरली में यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, टाइम को किससे मल्टीप्लाई करना है, कितने क्वार्टर होते हैं 1 ईयर में, 4 क्वार्टर्स होते हैं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द रेट विल बी डिवाइडेड बाय 4। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द compound interest when it will be yearly, half yearly or quarterly. So first of all we will take an example for the finding the compound interest. Yes, we will take one example. Find the compound interest on rupees 10,000 at 4% per annum for 3 years and compounded annually. Here the compound interest will be annually. So for this what will we do? Principal will be 10,000, same as it is, and the time is 3 years, it will also same, and the rate will be what is the rate, 4% per annum. Now we will find first of all amount. What we have to find, amount. It is a formula for the amount, R by 100 power time. So it will become, principal is 10,000, 1 plus R is 4 divided by 100, power is 3. So after solving this, 26 by 25 power is 3. Now we will open this power. What will we get from here? By solving this one, we will get amount is equal to 10,000, 26 पावर कितनी है आपके पास, 3 है। सो वी विल ओपन इट 3 टाइम्स, 26 by 25, 26 by 25, yes, is that clear? So this is 60 into 26 into 26 into 26, yes. What will we get after solving this one?
So calculate all the values. Yes, what will we get after solving it? In 16 into 6, 76 into 26, we will get 11,248 rupees 64 paisa, and therefore compound interest is equal to amount minus P. P means principal. Yes. So amount is 11,248 rupees 64 paisa, and the principal was 10,000. What will we get? 1248 rupees 64 paisa. So it is the question for finding the compounded annually. हमने क्या किया? Annually. Now we will take one more example for compounded half yearly. Yes. Now we will take the question. What will be the compound interest on 40,000 rupees at 16% per annum for 1.5 years if the interest is compounded half yearly? Now the condition is what? Half yearly. So given, what is given here? Principal amount is rupees 40,000. Yes. And rate is 16% per annum. Here annually is given, and time is what? 1.5 years. What I said earlier, that if we want to find in half yearly, for half yearly, what we have to do? Yes, what will we do for half yearly? Yes, for half yearly time will be double and the rate will be half. Yes, time will be double. 1.5 means 3 half years. How many years will be? 3 half years will be there. We will multiply by 2 and the rate will be divided by 2. So it will be half yearly. Yes, half yearly. Now apply for the compound interest. Firstly we have to find amount. So for the amount, principal 1 plus r by 100 power n. Now P is 40,000. Now 1 plus r. R is what now for half yearly? 8% divided by 100, and the time is 3. Now half yearly के लिए हमने क्या किया? Once again I will repeat it again. Time will be double, rate will be half. So after solving this one, 40,000, and by taking LCM, what will we get? 100 plus 8 power is 3. It will become 40,000 into 108 divided by 100. How many times it will be? 3 times, because the power is 3. So we will multiply it into 3 times. So this will cancel out 4 zeros, and remaining part will be 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 25s are. So it will become 108 into 108 into 108 divided by 25. After solving all these, what will we get from here? Yes, what will we get from here? So yes, by solving, what will we get? 50,388 48 paisa. And now for the compound interest half yearly, A minus P. A means amount minus principal. Now the amount is 50,388 rupees 48 paisa, and minus amount is principal is 40,000. After subtracting we will get 10,388 rupees 48 paisa. So how we can calculate the value of the compound interest half yearly? Yes. Now we will take one more example for compounded quarterly. If we have to given that compound interest will be quarterly, then what will we do there? So time will be multiplied by 4 and rate will be divided by 4. So that's the way by which we can calculate the compound interest yearly, half yearly and quarterly. Thank you.